Okay, last time we talked about the macros, right? Today we talk about the procedures. Okay, I have got a MacBook today on, so let me share a screen or VS Code somewhere. Yes, let us do things in a VS Code today. Okay, uh, share the screen, entire screen. Okay, this one, share it. You must have used the VS Code. Okay. You can use the 8086 emulator. That's better because it goes stepwise and a lot of things in it. Uh, but right now I'm on a Mac, so I will go on a VS Code. This is the VS Code, Visual Studio Code. This is the editor we use it for everything, right? And here you guys just go in a VS Code. We do one thing first. We need to have an extension. Okay, in the extensions we write here masm/tasm. Okay, and you have to install it, just simple as it is. That is it. Masm tasm you have to install. Okay, then we go file and we open folder, and we go to new, we create new folder on desktop. We say MCA ALP, and I create it. Say open. Okay, and here I just create a new file. Just click this button, which is the create new file, or just right click and say new file, and write it. Say for example, this is my procedures, proc dot asm. Okay, and we have here the title. Write with me, title. Is my screen visible? Yes, sir. Title learning procedures. Okay, we have firstly dot model small, that is same thing we have. Dot model small, then dot data. In data we got some messages, say msg1 db. We already know these things, 1013 comma double quotes. Say I would say is the first message, then I got a dollar sign to end it, right? We already know it. And in VS Code we can say copy paste, control option down arrow, give it to message number second, message number third, copy paste these things. And then I had this Grammarly icon coming up, message number here 4, and here it is 5. We say second, third, fourth message, and we got the fifth message here. Okay, then we got dot code. Now what we have after dot code? A start label, right? And we may have the end start also. Whose message? हाँ जी बोलिए. When we have the start message, what we'll have to close the start? हाँ जोर से बोले. And Yes, end start. Okay, we have the end start, and before the end start we also have dot exit. We know these things, right? Then here what we do today is we will say here main proc. I will make you understand. I don't have actually writing pad with me, not main, it's a proc, proc. Okay, and the procedure ends with the end p, so I say main end p. Like we have the end segment and s, we have end macro and m. Similarly we have end p for end the procedures. We will now on, we will do the same style of coding, this style, where we have the main procedure and we have the main end p, and inside we need to first have a boilerplate code. What is the boilerplate code doing? Move into, shabash bolo jaldi.
हाँ जी, बोलिए। move in Move into what? ax at data, X, ax at the box, सारे बोलेंगे जल्दी से. And फिर move हाँ, ds, move, right. Move DS. Yes, move into DS. ds, DS. ds Comma again, AX. dx. ds, comma So ax. what are we trying to do here? So basically, we are telling what we are going to do to us. No, we are initializing data segment register. This is initializing data segment register with the data segment in the memory, right? Okay. After that, we have initialized it. Now I want to print these strings. Last time we printed it using the macros. Okay. Now we print it using the what is called as the procedures. Okay. So to have the procedures, what we have is here we say firstly load effective address into the DX register of MSG1. So we know now because if we have to print a string, our address has to be in the DX register, right? We know that the offset has to be in DX register. Then after that we need to move AH and 09H and all that. But what we do here is we will call a procedure. Maybe I call this print. So I'm calling the print procedure. So that means this print is a procedure which is somewhere outside the main. So I create here the print procedure. I say print proc. So when it is a print procedure, so it need to have print and p. And before it has a one more thing that's called return. The procedure is return. So we also need to have using the and this p of main, we need to have here the return statement. So a procedure has a name, like it's a proc, it is a procedure, its name is print. So whenever you want to call it, you have to use the call call. Okay. Then you want to do something, you call it, and inside what I do, I want to do something. So here I want to put into ah, say for example 09H, and I call the interrupt 21H. Okay. Now what will happen is that I am calling this print. Now the code will jump from here to this guy here, and this one starts putting into AH09H and calling the DOS. And before I did that, I put into the DX message 1, right? In case of macros, we were passing this message 1 to the macro, right? Okay, but here in the procedure there's a limitation. You can't pass anything to the procedure. Okay, but you can return from it, and you can pass. If you want to pass something to procedure, you can pass it using the registers like I did here. I put something in the register DX. Now has somebody come up? ऐसा मुश्ताका मोइन admit. ठीक है. So here if you want to run it, so you right click and you say run ASM code. If it does not have errors, it is running. So first message is coming up here, as you could see, right? You see the first message is coming up here. So it is running. So that means I will make you understand again. If you want to print now the message second, what I have to do, I have to repeat this code. I will say copy paste for 4 times. So this is the message 1. Now I print the message 2. After that message 3. Okay, and after that we have a message 4. Now if I right click and run this code, okay, run ASM code, now you see all the messages are printed here, first, second, third, and fourth. So what is happening here? So what's happening, let's discuss now. Look at me firstly. Let me stop sharing the screen. You look at me, I will make you understand things. Okay. Okay, cancel. So what I have done is, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? अच्छा. So what I am saying is, in our 8086 we have two things. One is the macro, one is the procedure.
Okay, procedure is like your it's not like your methods we have seen the functions and all, because in the procedures of 806 you can't pass anything, no parameters. You can't pass the formal parameters and all. Okay, you cannot pass anything to the procedure. That's the one limitation. But why we do that? Because we have other ways to pass. You can have a register which are general purpose registers. You can put into that, you can put into the stack, you can put into the memory, and you can access that memory. So you don't need to pass anything to the procedure as such. ठीक है? So what we are having here is we have a procedure, okay, which is started by the main, we say for example main proc, or we say print proc. So proc is the keyword first of all. If you have to create a procedure, what is procedure for the non-IT students? What I am telling you, procedure is like a function. Okay, it is a group of code. What we do is we do not want to say, for example, you have to do math program, you want to do add, subtract, divide and everything. So you can put all code in your main file, it will be messy, right? But instead what you do is, Bazila and Ehsan Mushtaq, where is your camera off? And Sana, Mahak is also having camera off. You do not have to put camera off. Ehsan Mushtaq and Bazila. Ehsan Mushtaq, why is your camera off? Let me remove this guy. So what I am saying is, the procedure is like a bunch of code. Okay, you want to group things. Say for example you have multiple jobs to do. What do? You group things, na? You group into, say for example you have in your room you have to do two jobs. You have to do paint job, and you have to do some fitting, electric fitting, and you have to do paneling, right? So जो आपको पेंटिंग का सामान है, आपने क्या किया काम, एक बॉक्स बनाया है बड़ा सा, उसमें पेंटिंग का खाली सामान रखा है, और दूसरा एक बड़ा बॉक्स है उसमें जो आप पैनलिंग कर रहे हो तो उसका सामान रखा हुआ है. अब आपने फिटिंग करनी है तो तीसरा बॉक्स. अगर आप सारी चीज़ें जंबल करके रखोगे फिर आपको खुद समझ नहीं आएगा कि प्रिंट वाला का कौन सा है, पेंडिंग वाले का कौन सा है, इसका कौन सा है ना. सो हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना, ग्रुपिंग करते हैं. मैं बीएससी गाइज को समझा रहा हूँ जो बीएससी से आए हैं, ठीक है. तो हम क्या करते हैं काम, हमने ग्रुप किया ना एक चीज़ क्लासिफिकेशन की. जैसे अगर आपको स्कूल्स में काम होते हैं या यहाँ पे 7 सब्जेक्ट्स हैं आपके, क्या आप एक ही कॉपी पे सारा लिखोगे? फिर आपको समझ नहीं आएगा कि नेटवर्किंग वाला कौन सा चीज़ है, वो कौन सा है और कहाँ से ख़त्म है ना. आप क्या करते हो, आपने अलग अलग कॉपी बनानी होती है, आप अलग अलग कॉपी बनाते हो, अलग अलग कॉपी बनाते हो. तो आपने क्लासिफिकेशन की, ग्रुपिंग की. इसी तरीके से हम कोडिंग के अंदर मॉड्यूलरिटी करते हैं. हम कहते हैं ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, जहाँ पे हम क्या करते हैं काम, कोड को अलग अलग ग्रुप करते हैं, और इसको लिटरल नॉर्मल टर्म्स में हम फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है. और अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होंगी उसमें हम मेथड्स बोलते हैं. और यहाँ पे जो हमारा है 8086 हम इनको प्रोसीजर्स बोलते हैं, ठीक है. ये सेम ही चीज़ है असल में, कि आपने ग्रुप किया है कोड को. तो जब आपने ग्रुप किया है कोड को, जैसे मैं आपको बोलूँगा चलो मुझे मैथ का काम दिखाओ, व्हाट यू विल डू, यू हैव टू कॉल द मैथ कॉपी, है ना. यू हैव टू गेट द मैथ, यू आर कॉलिंग इट, यू आर कॉलिंग द मैथ कॉपी. आ जाओ मैथ कॉपी, मेरे को मैथ कॉपी चाहिए. नाउ अब क्या होगा कि जैसे कमरा एक है, यहाँ पे हम पेंटिंग कर रहे थे, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, पेंटिंग कर रहे थे, और बीच में हम पैनलिंग का काम शुरू किया. हमने इसमें अब पैनलिंग का काम शुरू किया, ठीक है. तो हम क्या करेंगे काम, हम पहले जो ये पैनलिंग वाला जो सामान यहाँ पे बिखरा हुआ है उसको उठाएंगे, सेव रखेंगे कहीं पर, है ना. हम मत करेंगे पहले से शुरू, जहाँ पैनलिंग शुरू, जहाँ हमने पैनलिंग ख़त्म की है हम नेक्स्ट जब आएंगे वहीं से शुरू करेंगे. लेकिन अभी पेंट का काम चलेगा, तो इसलिए वो सारा सामान जो है ना हम उठाएंगे और हम कहीं पे सेव रखेंगे. और हमारा जो प्रोग्रामिंग में होता है स्टैक, जहाँ पे हम सेव रखते हैं, ठीक है. तो उसके बाद हम अब पेंटिंग वाला जॉब लाएंगे, ठीक है ना. आपने प्रीफेच क्यू देखा माइक्रो प्रोसेसर का, कि अभी जो बस इंटरफेस हमने कहा कि पाइपलाइनिंग होती है ना. पाइपलाइनिंग में क्या होता है कि भाई साहब आप एग्जीक्यूट तो कर रहे हो, आपका एग्जीक्यूशन यूनिट एग्जीक्यूट कर रहा है एक इंस्ट्रक्शन, लेकिन पाइपलाइनिंग से प्रीफेच क्यू आपका वहाँ से 6 बाइट्स लाता है. वो कहाँ पे रखता है, वो कहाँ पे रखता है, प्रीफेच क्यू में रखता है ना. 6 बाइट जो हमारे प्रीफेच क्यू है बस इंटरफेस यूनिट में, ठीक है ना. तो यानी कि क्यों हमने करते हैं, क्योंकि आपने इस इंस्ट्रक्शन में काम किया तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसकी बाद वाली होगी. लेकिन जब आपने जंप मारी, जब आपने क्या मारी, जंप,
अब आपको ये वाला कोड तो करना ही नहीं है, आपने जंप मारी कहीं और, मेरे पास पेन नहीं है, आई कुड हैव शोन यू बेटर वे, मेरा मार्कर वो वहाँ पे हो गया, फिर भी मैं आई विल ट्राई राइटिंग विद द फ्री हैंड. वन नोट. देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बोर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. एंटायर स्क्रीन शेयर. मैं कह रहा हूँ इफ़ आई कैन ड्रा इट विद द फिंगर, मैं कह रहा हूँ कि आपका ये लाइन ऑफ कोड यहाँ पे दिखे आप, ये आपके लाइंस ऑफ कोड्स हैं. ठीक है, आपने अब आपने ग्रुपिंग की, आपने एक कोड रखा है इस बॉक्स में, वो अलग है एक प्रोसीजर में, जिसके हम प्रोसीजर कहते हैं यूजिंग द प्रॉक. ये नॉर्मल लाइंस ऑफ कोड है. अब यहाँ पे आपको ये जो ये वाला लाइन ऑफ कोड है, इसमें बाकी इसके बाद और भी लाइंस ऑफ कोड है, लेकिन यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ गई इस कोड की. सो व्हाट यू विल डू, फ्रॉम हियर यू विल जंप हियर, राइट. Yes, sir. सो दैट मीन्स कि ये जो बाकी वाला जो आपको है ना अभी करना बाकी है, ये जो बाकी कोड था करना बाकी है, तो ये एड्रेस जो यहाँ पर है, हम कहाँ पे पहुँचे थे, ये सारा हम स्टैक में रखते हैं, वी पुट इट इन अ स्टैक. ठीक है, क्योंकि जब मैं ये ख़त्म करूँगा मैं वापस आना चाहिए वहीं पे, और उस वक्त रजिस्टर्स में क्या था क्या नहीं था, उस वक्त कितना काम पहुँचा था, वो सारा मैं सेव करूँगा इन द स्टैक. Okay, and this thing is called a context switch. In operating system parlance we call it context switch. That is why we do not want to do procedures if अगर जॉब बड़ा छोटा सा है, यानी कि ऐसा हो गया कि आपने यहाँ पे पेंटिंग का है कर रहे हो कमरे में, और पेंटिंग का सामान बिखरा हुआ है चारों तरफ से, आप फिटिंग वाले को एक पेज कसना है खाली, है ना, फिटिंग वाले को क्या कसना है, पेज. तो अब मैं ये सारा सामान पहले कहीं पे रखूँगा और फिटिंग वाला आ जाएगा, वो तो बड़ा इसमें टाइम लगेगा इसी करने में, कॉन्टेक्स्ट स्विच में ही. सो हम कहते हैं कि अगर छोटा सा प्रोग्राम है वो आप मैक्रो से लिखें, क्योंकि मैक्रो जो होता है ना वो इनलाइन होता है. मैक्रो इज़ व्हाट, इनलाइन. मैक्रो में ये नहीं जंप नहीं होती. मैक्रो में क्या होता है कि आपका एक प्रोग्राम है, आपने बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है. अब कहीं पर मैक्रो है, यहाँ पर आपका मैक्रो आ गया, फिर आपने और लिखा है, ऐसे ही प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, फिर मैक्रो यहाँ पे एक और है. अब मैक्रो में क्या होता है कि जो मैक्रो में आपने कोड लिखा हुआ है, ये मैक्रो का कोड है, ये उठ के जहाँ जहाँ मैक्रो आपका ज़रूरत है वहाँ पे चिपकेगा, ये जंप नहीं मारेगा, यहाँ से इधर जाएगा इस लाइन ऑफ कोड पे, तो आपको कोई सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ से उठ के यहाँ पे चला जाएगा. तो उसका मतलब ये है कि अगर आपको, अब इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आपको एक बड़ा सा प्रोग्राम है उसको मैक्रो बना दिया आपने, तो आपको 100 जगह मैक्रो ज़रूरत है, वो 100 जगह वो कोड चिपकाएगा, है ना, तो आपका कोड बहुत बड़ा हो जाएगा. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम. सो हम कहते हैं कि मैक्रो आप वहाँ करो जहाँ छोटा कोड है. क्यों, ताकि हम कॉन्टेक्स्ट स्विच से बचें, वरना प्रोसीजर इज़ द बेस्ट थिंग टू डू. लेकिन उसमें क्या होता है कॉन्टेक्स्ट स्विच. व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट स्विच, क्योंकि जो जिस लाइन ऑफ कोड पे आप कर रहे थे, आपके प्रीफेच क्यू में बाइट, जो बस इंटरफेस यूनिट हमने बताया, उसमें जो प्रीफेच क्यू में 6 बाइट्स आपने कोड रखे थे. क्यों, आपको पता था आप ये लाइन ऑफ कोड कर रहे हो तो इसके बाद ये वाली करोगे आप, है ना. माजिद आप माइक ऑफ करो आपका यार, ये क्योंकि आपने जो ये लाइन ऑफ कोड किया, आपको पता है कि जैसे मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कोड किया हुआ है, आप एक डिश बना रहे हो, इसमें 50 लाइंस ऑफ कोड है डिश में, लेकिन इसके बीच में एक आ गया, वो अलग सी पहले आपको डिश तैयार करनी है. एक फॉर एग्जांपल इसमें एक आ गया, एक आइटम प्रिपेयर करना है, वो अलग से एक डिश पहले तैयार करनी है, वो इसमें ज़रूरत लगेगी इस डिश में. अब हमने क्या किया, वो डिश का कोड हमने अलग से रखा, है ना, और आपने जब ये डिश बना रहे थे, आप यहाँ पहुँचे इस लाइन पर, तो आपने यहाँ से जंप मारी उस दूसरे वाले कोड पर, ठीक है ना. यानी कि अब जो दूसरा वाला वो जो प्रोसीजर वाला कोड है, आपके प्रीफेच में वो लोड करना है ना. जब आप ये लाइन ऑफ कोड कर रहे थे, ये 50 लाइन ऑफ कोड कर रहे थे, ये आप में जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जो हम कोड अभी कर रहे हैं वीएस कोड में, देखें आपको जो ये जो लाइन्स ऑफ कोड है ना, लाइन नंबर 1 2 से फॉर एग्जांपल प्रिंट कहाँ पे आ गया हमारे पास, यहाँ पे 17 तक. जब तक 16 लाइन्स ऑफ कोड थी, ठीक है ना, ये सारा जब फॉर एग्जांपल आईपी इस वक्त पहुंचा है लाइन ऑफ 16 पे, आईपी इज पॉइंटिंग टू द लाइन 16 कोड, ठीक है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर यहाँ पहुंचा है, तो प्रीफेच क्यू में तो उसके बाद वाले सारी चीज़ें होंगी. लेकिन यहाँ से आपने जंप मारनी है इस लाइन पर, लाइन नंबर 34 पर, क्योंकि आप कह रहे हो कॉल द प्रिंट, और प्रिंट कहाँ बैठा है, यहाँ पे लाइन नंबर 34 पे. सो इट इज़ जंप्ड हियर. लेकिन जब ये काम करेगा ख़त्म, इट हैज़ टू कम बैक टू द सेम लाइन. सो दैट इज़ वाई इट स्टोर्स दैट एड्रेस. और अगर इसने रजिस्टर्स में कुछ रखा है इस वक्त, इट हैज़ टू स्टोर दैट ऑल्सो. सो दैट मीन्स
this is what is called the context switch. It has to do a lot of homework. The processor has to do, operating system has to do a lot of homework first. It has to do housekeeping, I mean to say that it has to save the registers, it has to load the address कि मैं किस लाइन पे पहुंचा था, उसके बाद यहाँ गया और ये वाला कोड इसने ख़त्म किया, जब यहाँ पे रिटर्न आ गया ये वापस आएगा वहीं पे जहाँ कॉल थी. कैसे आएगा? क्योंकि ये स्टैक से दिखेगा कि भाई मेरा एड्रेस क्या था, ये लाइन नंबर जो 20 है इसका एड्रेस सेव करके रखेगा स्टैक में, फिर स्टैक से ये एड्रेस निकालेगा, बोलेगा मैं इस लाइन पे पहुंचा था, ओके अब मैं ये वाला करूँगा. तो इसलिए अगर आपको छोटा सा कोड है जैसे ये वाला जो हमने किया, ये बेटर है आप मैक्रो से करें. मैक्रो क्या करेगा, उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं होगा, जहाँ मैक्रो था वहाँ ये कोड को चिपकाएगा. ठीक है ना, ठीक हो गया. अब जो आपका प्रोसीजर है उसको कैसे करेंगे हम, वी से कॉल, फर्स्टली द कॉल टू कॉल द प्रोसीजर. जैसे आपने वो वाला था ना आपका मैक्रो, उसमें क्या करते थे हम मैक्रो को सीधे ही कॉल करते थे, उसमें कॉल लिखने की ज़रूरत नहीं थी जब ना मैक्रो हमारे पास था. व्हाट वी डू फॉर द मैक्रो, वी सिंपली कॉल इट प्रिंट स्ट्रिंग. लेकिन उसमें मैक्रो में आप पास भी कर सकते थे, जैसे मैसेज 1 हम उसको पास करते थे. यहाँ पे प्रोसीजर में ये लिमिटेशन है, यू कांट पास एनीथिंग. सो दैट इज़ वाई जो मैसेज 1 है वो मैं पहले ही dx में डालता हूँ, बजाय इसके मैं इसको भेजूँगा. जैसे मैं प्रिंट स्ट्रिंग में जो मैक्रो था उसमें भेजता था मैसेज 1, यहाँ मैं नहीं भेजूँगा. ठीक है ना. यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, पहले ही मैसेज 1 dx रजिस्टर में डालेंगे, ओके फिर देन आई कॉल द प्रिंट. व्हेन आई कॉल द प्रिंट इट विल जंप हियर लाइन नंबर 34. वहाँ पे ऑलरेडी dx में मैसेज 1 बैठा हुआ है. So you put into A09H and call the DOS, interrupt 21H, you call the DOS, and DOS knows what is in DX, and 09 means print the string, so it will print that string, message 1. उसके बाद आपने क्या किया, अब आपने ये वापस आएगा इसी पे, यहाँ पे लाइन में 17 पे, इसलिए रिटर्न लिखना बहुत ज़रूरी. RET कीवर्ड रिटर्न लिखना ज़रूरी, so that you get back to the calling program. अब यहाँ पे कॉल पे आ गया, जहाँ पे था ये वापस आ गया. अब इसने dx रजिस्टर में मैसेज 2 डाली, दैट इज ऑफसेट ऑफ मैसेज सेकंड. नाउ इट अगेन कॉल्स द प्रिंट, सो दैट मीन्स जंप्स फ्रॉम लाइन नंबर 20 to line number 34 and starts putting into AH09H call DOS. When the DOS is, when you call the DOS, he sees the AH, it is 09H code, that means it has to print a string what is in DX. So DX में ऑलरेडी अपने मैसेज 2 डाला हुआ है, तो ये डॉलर जहाँ तक इसको डॉलर मिलेगा तब तक वो प्रिंट करता जाएगा. सो इट इज़ वर्किंग फाइन. एज यू कुड सी, रन ASM कोड and bingo, first message, second, third, fourth, everybody, all messages are done. Hanji, questions before I wind up the class, because you are saying we have networking class में issues होते हैं बाद में. So आप मुझे बताइए कि any issues in this code. कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाऊंगा, don't worry. सर वहाँ पे जो मेन कीवर्ड था वो कीवर्ड हाँ, नेसेसरी है वहाँ पे. it is not keyword, main is not keyword. main proc जो मैंने लिखा ना, यस सर. it's not a keyword, you can write it anything you like. It's just a procedure, share. It is just a procedure, you can write anything, you can write it Bazilla maybe, it doesn't matter, okay. Even this start, it's not a, this start is just a label, you can write Junaid here, don't worry. Then you can say at the end and Junaid right here and start. So you this is, you could say beginning, start के मतलब beginning लिख लो, कोई मसला नहीं. ठीक है, क्योंकि it's not a keyword. You see any keyword here, it's in a blue. You just see anything is a keyword that's in a blue, right? So आपका proc जो है वो, ये मैंने प्रोसीजर बनाया. हम ऐसे ही काम करेंगे, हम एक हमेशा एक मेन proc बनाएंगे. अगर फिर हमें कोई और काम करना है वो किसी प्रोसीजर में रखेंगे. ठीक है ना, ठीक हो गया. हाँ, any more questions? कोई मसला नहीं, डोंट वरी, टेक इट इजी, यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम. आज मत मेरा राइटिंग पैड नहीं था, आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि आई हैव मेक यू नो अंडरस्टैंड थिंग्स, क्योंकि राइटिंग पैड से थोड़ा सा बोर्ड पे आई एम नॉट सेटिस्फाइड एक्चुअली माई सेल्फ विद माई क्लास टुडे दैट यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली व्हाट आई एम सेइंग. इवन दो इट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, जो IT वाले बंदे हैं, BCA वाले, उनको तो समझ आया होगा, मुझे फंक्शंस का ही मसला है, लेकिन BSc वालों को शायद थोड़ा सा होगा. इफ़ यू हैव क्वेश्चन यू जस्ट गो थ्रू दिस थिंग, आई विल सेंड दिस. आपने कोड लिखा सबने? आप एक काम करेंगे, आप यस सर. आप एक काम करेंगे, आप मैसेजेस लिखेंगे, ठीक है. यू विल डू द मैसेजेस यूजिंग द मैक्रो एंड द प्रोसीजर टुगेदर एंड शो मी. जिसको कोई इशू है ना बेटा सना,
क्या है वो नाम है उसका, तंजीला, जो ना बीएससी वाले गाइज हैं. यू डोंट Yes, वरी, sir. जस्ट टेल मी ना, मुझे यहाँ समझ नहीं आया सर, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक यू अंडरस्टैंड. You don't worry. You can call me later or you can text me. You can direct call me. Okay? जब भी मुझे टाइम Okay. आएगा आई विल कॉल यू बैक देन, नो प्रॉब्लम. बट मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड थिंग्स. पहले ये कोड लिखो, थोड़ा समझो कि कंट्रोल कहाँ से कहाँ जा रहा है ना. यहाँ से इसने जंप मारी तो इधर गया. पहले अपना कोड रन कराओ नकल करके ही, जो ना मैंने लिखा वो लिखा आपने. जी जी सर. राइट इट इन योर 8086 जो एमुलेटर दिया ना मैंने, एमुलेटर में आप पहले इसको लिखो. ठीक है? जहाँ प्रॉब्लम आती है किसी को भी, उबैद, माजिद, एनीवन, सहराब, एनीबडी हैज़ इश्यूज, you are most welcome to ask. Okay, then it's time to leave. Okay, Allah Hafiz.